ठीक है, चलो, सो लेट अस स्टार्ट द MCQs from current electricity. Yes. So this is 59th question. Yes, good evening. Okay, so अभी इसमें पढ़ेगा ठीक से. In the circuit given shown in the figure, the ammeter reading is, yes, that means we want to find out the reading of ammeter. Okay, तो देखो ठीक से. How can we get the reading of ammeter here? तो उसके लिए इसका एक सिंपल सा इक्विवेलेंट सर्किट हमको ड्रॉ करना पड़ेगा. देखो, अगर इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे ना, तो इस तरह से कुछ बनेगा. बैटरी विल बी ऑन इट्स ओन प्लेस, नो डाउट, हियर. बट सिंस देयर इज नथिंग इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स हियर, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, बराबर. अगर इसको हम बोल देंगे ए और इसको बी सपोज, तो ए और बी के भी नहीं है, और इवन ना ही सी और डी के बीच में भी कुछ भी नहीं है. तो इसका मतलब ए और बी पॉइंट को हम यहाँ पे कंडेंस कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं. कॉल दिस एज ए एज वेल एज बी पॉइंट. ठीक है. एंड दिस on the other side also, at this point here, C and D points are just combined together. Nothing is there in between these two. So therefore, अगर A और B को अगर हमने combine कर दिया और इसको अगर हमने बोल दिया suppose P और इसको suppose Q बोल दिया, ठीक है, तो A और P के बीच में ये 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसलिए A और P के बीच में एक 12 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लग जाएगा. ठीक है, ये बन गया हमारा resistance of 12 ohm in between A and B here. You can call this as P here. Okay, and one more resistance of 4 ohm here is also connected between B and B. लेकिन जबकि A और B combined हो गया, तो इसी पॉइंट के और P पॉइंट के बीच में और एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, जो दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ जाएंगे. मतलब ये 12 ओम का रेजिस्टेंस और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल हो गए. ठीक है. उसके बाद फिर यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, और उसके बाद ये पॉइंट Q है, और इस पॉइंट Q और C के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे. तो वो एक्चुअली 4 ओम का है, और उसके पैरेलल में और एक दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जो कि 12 ओम का है फिर से. तो ये 12 ओम. ठीक है. इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट सिंपली ऐसा बनना चाहिए जिसमें सिंपली ये जो है, ये बैटरी, उसके बाद एक सिंगल रेजिस्टेंस जो कि इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद एमीटर, और उसके बाद फिर से एक सिंगल रेजिस्टेंस जो कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जरूर. तो अभी ये 12 और 4 इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, जैसे कि लास्ट टाइम बताया था, अगर एक दूसरे का 3 टाइम्स है तो हमको क्या करना है, बड़े वाले को 1/3 करना है. तो 12 को 1/3 कर दो, सॉरी, अगर एक दूसरे का 3 टाइम्स है तो बड़े वाले को हमको 1/4 करना है, 1/4. तो 12 को 1/4 कर दो तो आ जाता है 3 ओम. करेक्ट है. और एट द सेम टाइम ये 4 और 12 ये दोनों भी पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसलिए बड़े वाले को मतलब 12 वाले को 1/4 कर दो तो उससे हमको मिल जाएगा 3. तो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और एक यहाँ पे लग गया. और बैटरी कितना है, तो 6 वोल्ट का बैटरी है, और 0.6 ओम का उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का. ठीक है. तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, बट एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो नहीं दिया है. ठीक है. सो इसलिए यहाँ पे हमको उसका खुद का रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. लेट अस कंसीडर इट एज अ आइडियल एमीटर. दैट मींस द एमीटर विद 0 रेजिस्टेंस. सो एमीटर का रेजिस्टेंस खुद का 0 है. ठीक है. तो ऐसे केस में ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बनता है पूरे सर्किट का, ये 3 ओम प्लस 3 ओम
plus 0.6 ohm. This will be actually the effective resistance of the whole circuit, which will be uh, used to find out the current, because we know that the current is actually equal to E upon external resistance plus internal resistance, where external EMF is going to be 6 volt, and external resistance here is going to be 6 ohm, plus internal resistance here is going to be 0.6 ohm, so that it comes out to be 6 upon 6.6, which actually comes out to be, if we just divide this by 6, then you can just get this as 1 upon 1.1, and hence 1 upon 1.1 will be the value, which will be approximately, अब देखो 1 upon 1.1 कितना आता है, तो it should be actually 0. यहाँ पे 10 बन जाएगा, तो or you can just say this will be 10 upon 11 actually. So 10 upon 11 को तो 0 पॉइंट तो आएगा, 100 बनेगा, तो 100 11 9 जा, yes, 11 9 जा 99, again 0 9 0 9 recurring आएगा वो, तो 0.9 means approximately it should be 0.8. Okay. चलो ठीक है, so let us see the next question. Yes, see here, ये जो है, can you see that this is a Wheatstone's network? ये 104th वाला क्वेश्चन अगर ट्राई करो ठीक से एक बार, just wait. Yes, this is the question. In the circuit shown in the figure, the ammeter reading, sorry. ये कहाँ से आ गया? Yes, the resistance between A and B. We have to find out. See here, सबसे पहली बात ये हमको समझनी है कि A में से जब करंट चालू होगा, तो it will just get split up in these two parts. Some current will flow through this 4 ohm, and remaining will flow through this 2 ohm. And both of these currents will just meet each other. Not they will not meet again. So these two resistances cannot be supposed to be in parallel actually. तो ये 4 ohm और ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो करंट्स जो है वो वापस नहीं मिल रहे हैं, और इवन ना ही ये 2 ओम और 4 ओम और ये 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे पैरेलल में है, ये भी नहीं है, ठीक है. तो एक्चुअली दिस इज अ Wheatstone's network. Can you find it out? See, one thing is that we can just combine these two resistances and say that they are in series. Even we can just combine these two resistances and say that they are in series, because the same current is flowing through these two resistances. So the equivalent circuit of this can be drawn like this. तो ये A suppose point है, तो यहाँ पे इसके बाद ये एक रेजिस्टेंस हमको मिलता है जो 4 ओम रेजिस्टेंस का है, और यहाँ से एक दूसरा 4 ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है. ये 2 और 2 का कॉम्बिनेशन जो है वो 4 बनेगा. तो दिस इज द 4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड हियर, and is also a 4 ohm resistance here.
ओके, अभी देखो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट जो है, इन दोनों के बीच में एक 8 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. So we can just show it here. This is the 8 ohm resistance which is connected here. Okay. And then we can just say that this 2 ohm plus 2 ohm just comes out to be 4 ohm. So again, there is a 4 ohm resistance connected here. And there is a single 4 ohm resistance connected here in this way. So we can just show it here like this. And this is going to be the point B here. तो ये 4 ohm का और ये भी एक 4 ohm का. अब देखो इसको हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, ए और बी पॉइंट के बीच में देखो ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इस तरफ निकल रहा है और ये एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये तीसरा रेजिस्टेंस इस तरफ है और ये चौथा रेजिस्टेंस है, और इनके दोनों के बीच में भी और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है जो 8 ओम का है, और ये चारों रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम के ही है. तो इस तरह एक तरह से ये जो पूरा है वो वैसे तो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क ही हो गया, ठीक है नहीं. देखो ये 4 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख रहा है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस इधर है और ये वाला इधर दिख रहा है, करेक्ट है. तो ये चारों रेजिस्टेंसेस जो है वो इस तरह से व्हीटस्टोन्स नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं. और हमने ऑलरेडी देखा था थ्योरी में कि अगर व्हीटस्टोन्स नेटवर्क बैलेंस्ड होता है और वो भी अगर सपोज चारों रेजिस्टेंसेस अगर सेम होते हैं तो ये बीच वाला जो ब्रांच है वो कुछ काम का ही नहीं होता है. सो वी कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस मिडिल ब्रांच हियर. सो वी कैन जस्ट रिमूव इट. तो ये अगर बीच वाला ब्रांच अगर हट गया तो ऐसे केस में ये 4 और 4 जो है वो सीरीज में आ गए. ये 4 और ये 4 इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, 8 ओम. और ये 4 और ये 4 इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, 8 ओम. तो जब 8 ओम रेजिस्टेंस 8 ओम के साथ पैरेलल में लग जाता है तो उनका इफेक्टिव कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना बनता है, जरूर 4 ओम बनेगा. सो दैट इज द गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. तो 4 ओम रेजिस्टेंस विल बी द effective resistance in this case here. Okay, let us see another one. Okay, even this is also the similar question which is based on Wheatstone's network. We can see this is also a special type of Wheatstone's network. Just see यहाँ पे A point जो है यहाँ से दो रेजिस्टेंसेस निकल रहे हैं, एक तो इस B पे जा रहा है और दूसरा जो है वो सीधा C पे जा रहा है, और D से भी दो रेजिस्टेंसेस निकल रहे हैं, एक तो B पे जा रहा है और दूसरा डायरेक्ट C पे जा रहा है, और B और C के बीच में भी रेजिस्टेंस है. तो इस तरह से ये भी एक व्हीटस्टोन्स नेटवर्क ही है, और उसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हमको चाहिए तो वो भी बिल्कुल हर एक रेजिस्टेंस के बराबर ही आने वाला है, बिल्कुल. Okay, let us do some questions based on meter bridge. Okay, serious question number 150 115 here. Yes, just read it carefully. When an unknown resistance and a resistance of 4 ohm are connected in left and right gaps of a meter bridge, the balance point is obtained at 50 centimeter. Then the shift in the balance point if 4 ohm resistance is now connected in parallel to the resistance in right gap is. Yes. So see here in the first setting, suppose this is the meter bridge roughly. This is the long wire, battery, rheostat. ठीक है, तो just forget about the rheostat. Directly we can connect it here. Okay, so अब यहाँ पे इसको बोलते हैं left gap. Okay, और इसको बोलेंगे right gap. Yes, so we can just say that
अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये हमको यूज करना है 2 बार, करेक्ट है? सॉरी, so let us draw this whole circuit 2 times. So this is the initial situation and this is the final one. Okay, so in the initial situation there is an unknown resistance and resistance of 4 ohm in the left and right. Okay, तो लेफ्ट में अननोन रेजिस्टेंस है तो ये x उसको मान लेते हैं, चलो ठीक है. So this is the unknown resistance connected here in the left gap and right gap में क्या क्या किया है हमने, एक रेजिस्टेंस 4 ओम का डाल दिया है. ओके, और हमको जॉकी कहाँ पे टच करना पड़ रहा है, बिल्कुल 50 सेंटीमीटर पे टच करना पड़ रहा है. So this 50 centimeter is the null point. So if this side is 50, then obviously this side will be 50 only because total is always 100. Okay, तो इससे हमको ये इक्वेशन मिलेगा कि x upon 4 is going to be equal to 50 upon 50, करेक्ट है? क्योंकि ये जो इधर का रेजिस्टेंस अपॉन इधर का रेजिस्टेंस इक्वल टू इधर का लेंथ अपॉन इधर का लेंथ, ये सिंपल सा फंडा है मीटर ब्रिज के बारे में. ओके, लेकिन अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, द शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट इफ a 4 ohm resistance is now connected in parallel to the resistance in right gap. ओके, तो अभी राइट गैप में हमने क्या किया, देखो राइट गैप मतलब ये, तो जहाँ पे सिंगल 4 ओम रेजिस्टेंस का था तो अभी उसके बदले हमने क्या किया, 4 ओम के पैरेलल में 4 ओम और एक जोड़ दिया. अभी लेफ्ट गैप को हमने कुछ भी नहीं किया है, मतलब वहां पे सेम ही है, बट यहाँ पे राइट गैप में 2 रेजिस्टेंसेस लग गए, एक 4 ओम का जो पहले ही था और उसके बाद और एक 4 ओम का जो उसके पैरेलल में हमने लगा दिया इस तरह से. So this parallel combination is put in the right gap here. So this is 4 and this is 4. Now तो overall left right gap में कितना आ गया resistance, 2 ohm का resistance आ गया, क्योंकि 4 parallel to 4 means 2 ohm resistance हो गया. तो our formula will become x upon 2 is equal to, अभी हमको balance point कहाँ पे मिलता है वो पता नहीं, but we can just understand that this will be at some point here which we call it as L suppose. So remaining distance will obviously equal to 100 minus L. Okay, अगर ये लेफ्ट साइड से L बनता है तो राइट साइड से जरूर 100 minus L बनेगा. So the ratio will become L upon 100 minus L, no doubt. So this will be the second equation we can just say here. Now this 50 and 50 can get cancelled and x upon 4 equal to 1 gives value of x itself to be 4. And if you just put it here, then we can get that 4 upon 2 is actually going to be L upon 100 minus L, which means this 2 will be cancelled with this 4 leaving behind 2 here, so that we can just get that 2 upon 1 is equal to L upon 100 minus L, and then we can just cross multiply here. So it will be 200 minus 12 is equal to L, which means 3L is equal to 200. Okay, so 3L is equal to 200 means L equal to कितना हो गया, 200 by 3, which actually becomes 66.67 centimeter here. But we want to find out the shift. Okay, just don't see the answer and just tick mark it as a first option here as a correct option. No, we want to find out the shift actually. तो shift कैसे मिलेगा हमको, shift क्योंकि already balance point was at 50 centimeter, right? So if it goes to 66.67 centimeter, then 66.67 minus 50 gives us the shift, which is going to be 16.67 centimeter, which is there in this option 2 here, which must be the correct one. Okay, so second option will be the correct here. Let us see the next question. Let us consider this 117 here. Just read the question carefully. Yes, when 2 unknown resistances are placed in the gaps of meter bridge, the null point is obtained to be 40 centimeter from one end. Okay, तो देखो जब 2 unknown resistances, मतलब इधर x
और इधर y। अभी ये हम ड्रॉ कर सकते हैं मीटर ब्रिज, देखो इस तरह से, ठीक है। और उसका जो नल पॉइंट है वो कहाँ पे मिल रहा है हमको, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। ओके, ये 40, तो मतलब ऑब्वियसली ये बचा हुआ जो है तो वो 60 हो गया, बिल्कुल। तो वी कैन जस्ट गेट द इक्वेशन दैट x अपॉन y is actually going to be equal to 40 upon 60, which means that x upon y must be equal to 2 by 3. Okay, give this equation number 1. Yes, now when one of the resistances is shunted with 10 ohm, okay, तो एक रेजिस्टेंस को हमने शंट किया, शंट मतलब पैरेलल में लगा दिया 10 ओम का रेजिस्टेंस उसके, तो null point is 25 centimeter from the same end. Okay, that means now the situation is somewhat different. In this case, this is suppose the left gap, right gap, the wire, and here x is kept as it is, suppose, and we have connected a resistance in parallel. एक 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है तो वो हमने किसी एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा दिया, जिसकी वजह से अभी नल पॉइंट 25 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखो, जिस एंड से ये 40 सेंटीमीटर था उसी एंड से वो 25 हमको मेजर करना है, तो मतलब अभी यहाँ पे नल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो गया इधर और यहाँ पे आ गया, तो दैट मीन्स दिस distance actually becomes 25 centimeter here. That means obviously the remaining distance is actually going to be 75 centimeter here in this case, right? So अभी देखो, अगर ये वाला डिस्टेंस अगर से ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि जरूर ये रेजिस्टेंस कम हुआ होगा, ठीक है ना। और पैरेलल में लगाने से हमेशा रेजिस्टेंस कम होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। तो इसलिए अगर x यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे y लगा हुआ है, और उसकी वजह से अगर हमको नल पॉइंट 2:3 रेशियो में मतलब 40 सेंटीमीटर पे अगर मिल रहा है, और अभी अगर यहाँ पे नल पॉइंट जो है वो अगर डिक्रीज हो रहा है, नल पॉइंट मतलब जो लेंथ ऑफ दिस साइड, x के रेजिस्टेंस के साइड का जो लेंथ है वो अगर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब जरूर रेजिस्टेंस x हैज बीन डिक्रीज्ड, y is going to be remain constant and only this x has been decreased. तो x डिक्रीज कब होगा, जब x के पैरेलल में हम कोई रेजिस्टेंस लगा देंगे, जैसा कि उन्होंने बोला है कि 10 ओम रेजिस्टेंस इज केप्ट पुट इन पैरेलल विद वन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ये दिया नहीं है कि कौन से रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पैरेलल में लगाया है, लेकिन ये हमको समझना होगा कि इट विल बी कनेक्टेड अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस ऑफ x ओनली, देन ओनली इट कैन डिक्रीज, तभी तो ये डिक्रीज होगा। और कितना बनेगा, अभी देखो ये x पहले था और अभी 10 ओम रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लग गया, जिसके कारण अभी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का x और 10 का, वो यहाँ पे बन जाएगा। तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, कैन बी से 10 into x अपॉन 10 plus x। याद है क्या बताया था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए रेडीमेड फॉर्मूला बताया था। दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगते हैं तो उनका रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे निकालते हैं, R1 into R2 अपॉन R1 plus R2, ये फॉर्मूला से हमको निकालना होता है। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ equivalent resistance in parallel combination. So according to that, this 10 parallel to x will produce an equivalent resistance which is of 10x upon 10 plus x value, which is going to be there in this left gap here, and right gap is also still containing y only. So we can just construct an equation that the resistance in left gap, that is 10x upon 10 plus x, divided by the resistance in right gap, which is y alone, and this should be equal to the ratio of lengths, where the length of this side will be 25 and remaining length is 75. So we can just get the ratio, that is to be 25 upon 75. Okay, and then we can just get the value of relationship between x and y again. So यहाँ पे और एक हमको x और y के बीच में का इक्वेशन बनेगा। So before that, we can just understand that this x will actually be equal to 2/3 times of y, correct है। तो x को हम यहाँ से लिख देंगे 2/3 times of y, and we'll just try to express everything in terms of y, so that y can be found out. And once we get y, we can just get x also by using this equation itself. Okay. So x के बदले हमको यहाँ पे डालना है 2/3 times of y.
तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लेते हैं, चलो। तो 10 इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, 10 प्लस एक्स, सॉरी 10 प्लस एक्स, and that is actually going to be here 1/4, correct है? Okay, but just by instead of expressing it in terms of y, we can just try to express it in terms of x, because here there is x appears two times here in the numerator as well as denominator, but y appears only once in the denominator only. So it will be better to express this y as 3/2 times of x, correct है? So 3/2 times of x, ऐसा हम इसको लिख देंगे, and we'll just try to express everything in terms of x only. So यहाँ पे 10x वैसे रख दिया अपॉन इस y को हमने लिख दिया, देखो y के बदले क्या आने वाला है, 3/2 टाइम्स ऑफ x आने वाला है, तो ये 3/2 टाइम्स ऑफ x आ गया y के बदले, और ब्रैकेट के अंदर जो 10 प्लस x था, तो it will be kept as it is. So this is 10 plus x as it is here, which is actually going to be 1/4 here. And then we can just cross multiply here in the next step. So if we just cross multiply, तो ये 4 जो है वो 10x के साथ मल्टीप्लाई होके 40x बन जाएगा, तो ये 40x आ गया इधर राइट साइड में, जबकि उस तरफ ये 1 into this whole thing will become the same thing only, and hence we can just get it as 3/2 into x into ब्रैकेट में आएगा 10 plus x. Okay, and we have to find out this x here, remember. So ये 2 को उस तरफ लेके जाओ तो बनेगा 80 into x, right, which is going to be equal to 3x into 10 plus x. अभी इसमें से हमको एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा 80x is equal to, if you just open the bracket, then we can get this 3x into 10, which comes out to be 30x, plus 3x into x comes out to be 3x square actually. So if we just take this 30x in this side, then we can be able to get this 80x minus 30x is equal to 3x square, and hence it becomes 50x is equal to 3x square, and hence x cancel, and we get this 50 is equal to 3x simply, which gives x is equal to 50/3. तो अभी 50/3 मतलब कितना हो गया, वो 17 के आसपास कुछ। और अगर ये x 50/3 है, गड़बड़ तो नहीं किया हमने, चेक करो एक बार। करेक्ट तो है।
Okay, maybe that there is a question printing mistake in the question. ठीक है, मेथड समझ में आया सबको ठीक से? Okay, so let us see the next question then. Okay, consider this question number 120 here. Okay, even 190, 119 to भी हम कर देंगे. Yes, just read the question. 119th is very easy. We can just do it orally. The balance point is in the meter bridge is about 35.6 centimeter. Okay, तो मतलब समझो यहाँ पे ये लेफ्ट गैप है, ये राइट गैप है, ये वायर है, और यहाँ पे एक्स रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वाई रेजिस्टेंस है. हमको पता नहीं कितना है, बट बैलेंस पॉइंट मिला हुआ जो है वो है 35.6 सेंटीमीटर पे फ्रॉम दिस एंड. ओके, अभी वो बता रहे हैं कि इफ द रेजिस्टेंसेस इन द गैप्स आर इंटरचेंज्ड देन न्यू पॉइंट विल बी. ओके, तो ये y इधर चला गया और x इधर चला गया. तो सीधी बात क्या है कि दिस बैलेंस पॉइंट विल जस्ट गेट शिफ्टेड इन सच अ वे दैट इट विल बी 35.6 फ्रॉम अदर साइड. तो ये अगर y है, इस तरफ अगर x है, तो बैलेंस पॉइंट विल बी सच दैट इट विल बी 35.6 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस अदर साइड. सीधी बात है. तो इसका मतलब यहाँ पे फिर यहाँ पे उतना ही आएगा जितना इधर यहाँ पे आया था. ओके, और वो कितना होगा 100 माइनस 35.6 रहा होगा. अभी 100 माइनस 35.6 कितना होता है उनको पता है? इट कम्स आउट टू बी 64.4. करेक्ट है? चेक. 64.4. So you can just select this one as a correct answer here. It's very simple, no doubt. Chalo, now next is resistors are connected in two gaps. Okay, resistances are connected in two gaps of a meter bridge. The balancing point is obtained as at 20 centimeter from the zero end. Okay, when 15 ohm resistance is connected in series with the smaller resistance, then the null point shifts to 40 centimeter here. Okay, so let us see. Suppose this is the meter bridge. ये left gap, ये right gap, और ये वायर. ठीक है, तो भी ये बताया है कि x suppose in the right gap and y is suppose there in the left gap. Okay, and suppose that अभी देखो इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि स्मॉलर कौन सा है? तो बैलेंसिंग पॉइंट देखो, बैलेंस पॉइंट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द जीरो एंड. दैट मीन्स अगर ये बैलेंस पॉइंट यहाँ पे 20 पे मिलता है, मतलब यहाँ पे अगर बैलेंसिंग पॉइंट हमको मिल गया, तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि x is going to be smaller one. Okay, so you can just get that x is going to be smaller than y. ये हमको इसमें से पता चल गया, क्योंकि जो जिस साइड का लेंथ छोटा होता है तो वो रेजिस्टेंस भी छोटा होता है, और जिस साइड का लेंथ बड़ा होता है वो रेजिस्टेंस भी बड़ा होता है, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो एक्चुअली लेंथ के रेशियो के बराबर हुआ करता है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे ये हम समझ सकते हैं. चलो, अभी when 15 ohm resistance is connected in series with a smaller resistance. ओके, तो मतलब अभी नया डायग्राम हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसके अंदर फिर से मीटर ब्रिज, ये उसका लेफ्ट गैप, ये राइट गैप, ये वायर. ओके, और अभी यहाँ पे x जो है, मतलब लेफ्ट गैप जो है, तो लेफ्ट गैप के अंदर सिर्फ x नहीं है, तो x के साथ एक और एक रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया. तो इससे यहाँ पे लेफ्ट गैप में क्या कितना रेजिस्टेंस आ गया?
अभी x + 10 इतना रेजिस्टेंस आ गया, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होते हैं, तो इसलिए x + 10 इतना रेजिस्टेंस आ गया इधर लेफ्ट गैप में, एंड राइट गैप में सेम, उसको उसको हमने कुछ भी नहीं किया है, तो राइट गैप विल बी y ओनली. ओके, सो दिस शिफ्ट्स टू 40 सेंटीमीटर. नल पॉइंट जो है वो यहाँ पे अभी 40 सेंटीमीटर पे हमको मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे देखो null point is going to be at 40 centimeter from this side. That means it will be actually at 60 centimeter from this other side, right? So what will be the two equations formed here? Just try to form them. तो यहाँ पे अगर हम ये इक्वेशंस फाइंड करेंगे तो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, x/y इज इक्वल टू 20/80, करेक्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया. तो इसको हम रिड्यूस करके x/y इज इक्वल टू 1/5 ऐसा भी लिख सकते हैं, नो डाउट. और अगर ये सेकेंड वाला इक्वेशन अगर कंसिडर करते हैं तो हमको मिलेगा x + 10/y इज एक्चुअली गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ लेंथ. अभी रेशियो ऑफ लेंथ कितना है, 40:60, विच एक्चुअली कम्स आउट टू बी 2/3, राइट. सो यहाँ से हमको मिल रहा है x + 10/y is actually going to be 2/3. Yes, but from this we can just get that y is going to be equal to 5x, करेक्ट है. y का वैल्यू हमको इसमें से मिल गई x. अगर ये वैल्यू y का हमने अगर यहाँ पे रख दिया इस इक्वेशन के अंदर, तो हमको क्या मिलेगा, देखो x + 10/5x is going to be 2/3. So if we just cross multiply here, then we get this 3x + 30 is going to be equal to 10x. So that in the next step we can just get this 30 to be simply equal to 7x, right? And hence we can just get this x to be simply equal to 30/7. And this 30/7 is actually going to be, okay, once we get this x to be 4.2, and y can also be found out to be 5 times of x. तो 5 times अगर करेंगे 4.2 को तो क्या मिलेगा, 4 5s are 20, so 21 ohm. So the resistances will be, smaller resistance will actually be 4.2 ohm, which is already not there. Okay, there may be some mistake in the question. Okay, so method is going to be the same only. Yes, let us see this 121th question. One ohm and 2 ohm are connected in series across the left gap of a meter bridge. Okay, that means ये समझो मीटर ब्रिज है, ये उसका लेफ्ट गैप है, ये राइट गैप है, और ये वायर है. ठीक है, सो 1 ohm and 2 ohm are connected in series across the left gap. मतलब यहाँ पे लेफ्ट गैप में कितना हो गया, एक्चुअली 3 ohm का रेजिस्टेंस लग गया लेफ्ट गैप में. ठीक है, balancing length is 60 centimeter. Okay, that means the balancing length here is going to be at 60 centimeter here from this one end. Okay, right gap में कितना resistance है हमको पता नहीं. Let us take it as y. Okay, if the resistances were connected in parallel instead in series, then the balancing length would be
in centimeter. Okay, so that means अभी फिर से हमको यही डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें ये लेफ्ट गैप, राइट गैप इज स्टिल कंटेनिंग y ओनली, तो राइट गैप में y ही रखा हुआ है। लेकिन अभी देखो लेफ्ट गैप में हमने ये जो 1 और 2 को पैरेलल सीरीज में लगाया था, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया था, तो अभी यहाँ पे हम उनको पैरेलल में लगा रहे हैं। तो 1 ohm is connected in parallel to this 2 ohm resistance here in, and that is connected in left gap here. So what will be the equivalent resistance in the left gap then? 1 और 2 का रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना बनता है देखो, वो बनता है 1 into 2 upon 1 plus 2, which actually happens to be 2/3, right है। So 2/3 ohm ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, and resistance in right gap is again y, and at this time the balancing length is obtained at a distance L, which is to be found out. So obviously the remaining distance will actually be 100 minus L, right? So if you just try to find it out, then we can just get this as, and here the remaining distance will be actually 40 centimeter. वो तो हम समझ सकते हैं आराम से। चलो ठीक है, so if you just construct the equation, then the first equation comes out to be 3 upon y is equal to 60 upon 40, करेक्ट है। ये देखो ये 3 अपॉन y इज इक्वल टू 60 अपॉन 40, ये फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया, ठीक है। सो इससे हमको मिलता है 3 अपॉन y इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू 3/2, राइट। सो इफ वी जस्ट कैंसिल आउट दिस 3, so we get this 1 upon y is equal to 1 upon 2, and hence we can just get that y is actually equal to 2, correct है। Yes, so y is obtained to be 2 here, and then you can just try to use it here and construct the second equation. What is the second equation? Rp is already there in this left gap here. ठीक है, तो second situation में Rp is there in the left gap, so Rp upon y will actually be equal to L upon 100 minus L, right? So you can just construct the equation Rp upon y is equal to L upon 100 minus L. Yes, so Rp is nothing but 2/3. So this is 2/3 divided by y is actually going to be L upon 100 minus L. So that if you just cross multiply it here, then we can be able to get this as 2/3 into 100 minus L is equal to y into L. But we know the value of y already, that is 2 here. So we can just put it here and get this as 2/3 into 100 minus L is equal to 2 times of L. So this 2 also gets cancelled. And if we just transfer these 3 in that side, then we'll be able to get this 100 minus L is equal to 3L. So that 100 becomes actually equal to 4L. And hence L becomes equal to 25 centimeter, which is already there in this option 1 here. Okay. So in this way, we can find out the length. So from this lecture, we just conclude, or we can just make sure that we need to use the formula for meter bridge effectively. So simply एक ही formula के ऊपर ये सारे questions based है, तो वो है simply the resistance in left gap upon resistance in right gap is always equal to the length in left side upon length at the right side. That's it. So ये सिंपल सा इतना फंडा हमको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। सो पोटेंशियोमीटर के ऊपर के जो क्वेश्चंस है या एमसीक्यूज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।